वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी हममनसब के साथ तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। It is the right of the people of Iran, and it will create a more conducive environment. In the end, I would like to once again emphasize the importance we attach to Pakistan-Iran relations and reiterate our resolve to further strengthen it in all dimensions. Once again, thank you very much, Mr. Foreign Minister. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी हममनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। And political stability in the province, contributing its shares in the common national effort which is in line with the values of the vision and leadership of Pakistan People's Party. Madam Speaker, I pray to Almighty Allah that our land, our beloved country, and democracy be protected from dangers and challenges that it is facing. May democratic forces always rise and shine in this country. May Almighty Allah bestow us with courage and capability to serve the people of our motherland, Sindh, on the vision and principles set forth by our founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and Qaid-e-Jamhuriyat Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto. Madam Speaker, I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mir Mohammad Nawaz Sharif, his team, the members of the coalition government and the federal government, Maulana Fazlur Rahman, Khalid Maqbool Siddiqui Saab, Akhtar Bengal Saab, Order in the house, please. मैं ये सुन रहा हूँ इनकी बातें, एक्चुअली मैं सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ कि आगे ये बजट सेशन कैसे चलेगा वो पता चल जाएगा मुझसे। मैंने शहबाज शरीफ कहा था। अच्छा जी, I would say that the survival to see a glimmer of hope after 3.5 years in which Sindh was subjected to neglect and disregard by the federal government for reasons best known to the rulers in Islamabad. We were not only subjected to unfair treatment when it came to privileges, but also received financial reprimand whenever it came to benefits to the people of Sindh. I will shed more light on how federal government deprived the people of Sindh from development on one side and also managed to restrain our efforts to provide them the needed services by holding back our rightful share and received of the 7th NFC award. Despite the heartburning, we continue to stand by our commitment to our people for giving them as much relief as possible. Hence, we are taking several steps to pass on the benefits to the common man. We feel it high time that we all join hands, setting aside all differences and work for the progress and prosperity of the country. In this backdrop, I would like to quote the encouraging words of the father of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, reposing trust in the people of this great nation. And I quote, "I have no doubt in my mind about the bright future that awaits Pakistan when its vast resources of men and material are fully mobilized. The road that we have to travel may be somewhat uphill, but with courage and determination, we mean to achieve our objective, which is to build up and construct a strong and prosperous Pakistan." Pakistan People's Party has always been a party of the people, for the people, by the people. We have contributed more sacrifices to the cause of democracy than any other political party. We vow to uphold democratic norms in its true spirit. The policy of our leaders always centered on the idea of welfare and well-being of the common man. They strove relentlessly to achieve these goals. Now, under the dynamic leadership of Pakistan People's Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari and President Asif Ali Zardari, the Pakistan People's Party and its government continues to work tirelessly for the uplift of the people. The effort to prepare the budget 2022-23 is in line with the collective vision of our leaders, and I feel honored to present budget for the financial year 2022-23. Madam Speaker,
मैं अगले बजट के नंबर्स देने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा हमारी जो रिलीफ हम दे रहे हैं अगले साल के बजट में, ताकि वह सामने आ जाए, और उसके बाद आगे थोड़े पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल की कहानी भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तहम्मुल से सुनेंगे और पता चलेगा कि क्या किया है इन्होंने पिछले 3.5-4 साल में। मैं सब बताऊंगा। मैं सबसे पहले जो अगले साल मैं मैडम स्पीकर जो पढ़ रहा हूं वो मैं अपने मैडम स्पीकर, we are sensitive to hardship being faced by the common man, especially farmers, due to recent water crisis and increase in price of essential commodities. In order to provide relief at the grassroots level, we have designed special programs in this budget to support a hard-hit social and agricultural sector. As part of post-COVID-19 recovery process, Government of Sindh has developed a two-pronged development strategy focusing on one hand on low-income group under social sector program. We are targeting specific. नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट के पेश कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध के बजट का हुजम 1700 अरब रुपए से जायद है। पेंशन के लिए 174 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़िलाई ADP के तहत तरक्याती बजट का हिस्सा 30 अरब रुपए है। सिंध में बजट में पेश पेंशन के लिए 174 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। New taxes, we are reducing taxes and we are doing away with some taxes, और उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अगले वाली साल में हमारी प्रपोजल है कि कॉटन फीस, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी अगले साल के लिए खत्म की जाए। ये टैक्सेस खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनके लिए हम अगले साल के लिए खत्म कर रहे हैं। हम एक पोर रिलीफ पैकेज जिसकी टोटल कॉस्ट 26.85 बिलियन वो इस बजट में रख रहे हैं और उसकी डिटेल्स में आगे आपको जाके दूंगा। To address issue of food insecurity and access of common man to food, Government of Sindh has earmarked 23.324 billion for wheat subsidy in the next financial year 2022-23. In order to provide relief to farmers, Sindh is offering the highest support price in comparison to the rest of the provinces, and the support price this year was 2,200 per 40 kilograms of wheat. Besides this, subsidy on seed, fertilizer, pesticide has been provided to the tune of rupees 2.552 billion in current financial year, and a provision of rupees 3 billion has been kept for the next financial year 2022-23. Madam Speaker, मैं जैसे मैंने कहा बजट आने से पहले मैं रिलीफ की बात कर रहा हूं। हमने एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2016 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पे और पेंशन की बात कर रहा हूं। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 में एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो भी हमने दिए थे वो हम मर्ज कर रहे हैं। बेसिक पे स्केल 2022 में हम सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए एडहॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। मैं बताना चाहता हूं आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाएं। आप तशरीफ रखिए।
करें, अभी ये शुरू उठाएं, डिस्टर्ब नहीं करें आप कंटिन्यू टू स्पीक बिकॉज मुझे पता था इन्होंने ये करना है, कोई ना कोई बहाना बना के ये करना है। इनकी तो पूरे लोग ही छोड़ के चले गए, इनको क्या पता है। अभी कुछ दिनों में ये बचे कुछ है समेत इनके, वो भी इधर ही आके बैठेंगे हमारे साथ, देख लीजिएगा जो इनकी साजिशें चल रही हैं। मैडम मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी जो पेज है सूबा सिंध की, वो बाकी सारी सूबों से ज्यादा है। इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे, अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं, और मैं पेंशन की भी बात कर रहा हूं कि इस वक्त हर ग्रेड में, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक सिंध सूबे के मुलाजमीन की पेंशन बाकी चारों सूबों और वफात की पेंशन से ज्यादा है। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर कहीं पेंशन बढ़ेंगी और हमसे ज्यादा हो जाएंगी तो हम अपने सूबे के मुलाजमीन को कम अज कम उनके बराबर करेंगे। इसके अलावा एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और मैं आज उसका ऐलान करना चाहता हूं कि जो ग्रेड 5 में थे कांस्टेबल, उनको मैं ऐलान करता हूं कि उनको 1 जुलाई से उनका ग्रेड बढ़ा के ग्रेड 7 में कर दिया जाएगा। मैडम स्पीकर, मैं जो सेल्स टैक्स रिलीफ मेजर्स है उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में 5% reduction in rate of recurring agents will continue for the next 2 years, that is up to 13th of June 2024. This relief was proposed for Pakistanis aspiring to work overseas. Services provided by cable TV operators are levied at a reduced rate of 10%. The existing relief is proposed to be extended for a further period of 2 years, ending 30th of June 2024. Cable TV operators in rural areas under PEMRA license of R category will be exempted from sales tax on service till 30th of June 2023. The rate of sales tax on service on commission charges received by food delivery channels are proposed to be reduced from 13% to 8% for a period of 2 years ending 30th of June 2024. This relief is proposed in order to encourage small-scale businesses. In all other cases, the services provided as rendered by commission agents shall continue to be liable for sales tax on service at 13%. The existing exemptions on health ये मोबाइल अलाउ नहीं है शहजाद कुरैशी साहब, ये मोबाइल अलाउ नहीं है शहजाद कुरैशी साहब। 2023. शहजाद कुरैशी साहब, आप मोबाइल अलाउ नहीं, आप मोबाइल नहीं यूज करें। मैडम स्पीकर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी मेजर अचीवमेंट्स हैं मैं वो कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा। मैडम स्पीकर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, appointment orders have been issued to 47,000 teachers in single phase who through merit-based recruitment process. The step is aimed at revitalizing the education sector by filling in all vacant posts across Sindh. Government of Sindh has launched Rescue 1122 service in the province. The service is aimed at providing immediate medical aid to people for shifting them to hospitals in emergencies. The service has been initiated in Karachi in the first phase and it will be rolled out to the entire province in the second phase. Initially, 50 ambulances have been provided, which will increase to 230 in this year. The service will be turned into a complete package of rescue, relief and rehabilitation, connecting fire brigades and trauma centers all over the province. In Karachi, the Green Line bus funded by the federal government has been operationalized with effect from 25th of December 2021.
Beside this, construction work on the Orange Line is near completion in current financial year. Government of Sindh has recently launched People's Bus Service. 250 buses will operate on 7 different routes in Karachi. For the procurement of 250 buses, DOS has spent 6.4 billion in 2021-22 and has allocated rupees 4 billion in next year's budget. In order to improve road infrastructure, Works and Services Department has completed 211 schemes during the financial year 2021-22, under which 1,695 kilometers of farm-to-market road have been constructed and 1,200 kilometers of intercity and intercity and town road networks has been reconstructed or rehabilitated. The Irrigation Department has so far completed lining of 318 miles of canals and plans to complete approximately 500 miles in financial year 2022-23 to save thousands of cubics of water. The Irrigation Department has also constructed 92 small dams, recharge dams and delay action dams in Nagar Parkar and Kohenoor area. These structures will store rainwater from the hill torrents of Karunjar and Kirthar Hills and cultivate about 255,000 acres of land and provide water for human and animal consumption. Agriculture Department has improved 1,110 water courses. Energy Department has electrified 225 primary health facilities in 13 districts and 11 government schools in Larkana through solar power. A 610 megawatt wind power project and 50 power solar power project under IPP mode is under construction. Besides, 660 megawatt electricity is being generated from Tharkol. Sindh Solar Energy Project has also initiated programs for establishment of 20 megawatt solar power facility on the rooftops and other available spaces in public sector buildings in Sindh. Despite financial constraint, Government of Sindh has assigned high priority to urban development, especially Karachi city. Development projects in Sindh, 6 major sectors including water supply, sewerage treatment, stormwater drains, solid waste management, internal roads and mass transit are underway in Karachi. Out of the total 31 foreign funded projects in ADP 2021-22, 7 projects costing rupees 189 billion are specifically for Karachi. Total allocation of foreign funded projects during current financial year 2021 was 71.164 billion, out of which 35.29 billion were earmarked for Karachi project only. Total allocation for Karachi-based schemes for next financial year is 118 billion rupees, which includes rupees 72 billion under provincial ADP, 5 billion under district ADP, and rupees 41 billion have been allocated under foreign funded projects. Government of Sindh is going to launch the Sindh Human Capital Project, Sindh 1000 Days Plus program in the next financial year. This project will be finalized jointly by GOS and World Bank with financial assistance to the tune of $400 million. The program aims to make significant positive change in reproductive, maternal, newborn and child health related indicators in Sindh. Injustice to Sindh and federal PSDP and CPEC projects. Madam Speaker, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं पिछले 3.5 साल में जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा. अगर किसी में थोड़ी सी शर्म होगी वो डूब के मर जाएगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं. पिछले 3 साल में फेडरल पीएसडीपी में रोड्स की स्कीम्स जो थी पूरे पाकिस्तान में 1.3 ट्रिलियन यानी 13,000 अरब रुपए की रोड स्कीम रखी गई और सिंध का हिस्सा इन 3 साल में क्या था? 1.5 अरब रुपए, 13,000 में से.
गया है। इसी तरीके से वाटर सेक्टर में 158 अरब रुपए की स्कीम्स रखी गई पिछले 3 सालों में। ये पीएसडीपी में है और ये मैंने डॉक्यूमेंट किए खतों के साथ, और इन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हमेशा मीटिंग से भाग जाया करते थे ये जब भी मैं बात करता था। 158 अरब रुपए में सिंध सूबे का शेयर था 1.2 अरब रुपए। ये हालत थी पिछले 3.5 साल में। और इनकी अपनी अय्याशियां वो चलती चली जा रही थी। और कहते क्या थे, अभी इन्हें बताया गया कि ये पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट ने 80% कर्जे लिए। जब से कर्जे लेने शुरू किए, ज्यादा किए उन्होंने। तो कहते हैं गलत बोल रहे हैं आप, 80 नहीं 76% थे। बड़ा कमाल किया, कर्ज पे कर्ज लेते चले गए। और इससे मैंने कहा था कमजोर हूं शेर और शायरी में, लेकिन गालिब का एक शेर पढ़ के सुना देता हूं आपको। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारा फाका मस्ती है एक दिन। वो रंग लाई, इनकी हुकूमत गई और इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं आएगी अब, चाहे वो कुछ भी करे। और इनकी हालत ये है, हुकूमत जाने के बाद कभी कोई साजिश बताते, कभी कोई साजिश बताते, और अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, कहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा इनके लीडर। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 अक्टूबर 1947 को कहा था लाहौर में एक जलसे में, और मैं कोट करता हूं, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। इनकी साजिशें नाकाम होगी, पाकिस्तान का कयामत कायम होगा, इनके बगैर कायम होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो याद आते हैं जब हिंदुस्तान ने एटमी बम के धमाके किए थे। और अब वही हालत है, इन्होंने इकोनॉमिक माइन बिछा दी हमारे लिए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन। इंशाअल्लाह ताला हम इकोनॉमी को वापस राह रास्त पे लाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, वी हैव नो अदर चॉइस, दे मे हैव अ चॉइस। सोच लिया कि पाकिस्तान खत्म होगा या पाकिस्तानी अफवाज को कुछ होगा, हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का कयामत कायम रहेगा। और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का बचाव करती रहेगी। तो इनकी ये 3.5 साल की हुकूमत आई, इन लोगों ने जो कुछ सिंध के साथ मैंने बताया करना था किया। 2 महीने पहले एक जमहूरी तरीके से पहली बार पाकिस्तान में थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनकी हुकूमत गई। और मैंने 2 महीने पहले की बात की, मैं बता रहा हूं, एक और शेर मुझे निकला दे, साहिल लुधियानवी का है, कुछ और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से, हम इंशाल्लाह तुलुए शहर है। और अब से आगे ना सिर्फ ये अगला साल, अगले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। मैडम स्पीकर, रिलीफ के मेजर्स बताएं। मैं अगले साल की बजट पे आता हूं। मैं इससे पहले कि मैं अगले साल की बजट पे जाऊं, एक और मेजर इशू जो हमें इस वक्त फेस कर रहा है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। जो सिंध का दर्द रखते हैं वो सुनेंगे, और जिनकी चीखें मैंने निकाली है वो चीखते रहेंगे ऐसे। This year we have seen severe
water shortages all over Pakistan. Whereas Sindh is facing drought-like condition, the share of Sindh has been fixed at 6.483 million acre-feet. During early Kharif against water code allocation of 8.292 million acre-feet. Untimely supply of water is another major issue. Cotton sowing season in Sindh starts early April. As compared to other provinces of Pakistan, we are early cotton sowers. Yet we faced 8% more shortages in comparison to the other province. As of May, Sindh has faced 55% water shortage, which has adversely affected our agriculture sector. Madam Speaker, we have taken up the matter of unequal distribution of water with the federal government. Politicization of this issue has worsened the situation in the entire country. I had personally taken up the matter with the Prime Minister of Pakistan and conveyed that Indus River System Authority is involved in unjust water distribution. Government of Sindh is rigorously advocating its case for regular and timely release of water as per Water Accord 1991, and it shall continue to do so. Madam Speaker, with your permission, let me now place before the August House fiscal performance of the government during the current financial year 2021-22. Against an estimated budget of 1,335 billion, the revised receipts of the provincial current financial year stand at 1,273 billion. We have received rupees 781.45 billion against budgeted receipts of 869 billion. In the 11 months of the current financial year, receipts of federal PSDB for the financial year 2021-22 stand at rupees 5.4 billion against the revised target of rupees 6.3 billion, whereas revised foreign project assistance stands at rupees 46 billion. The provincial tax and non-tax receipts are revised at rupees 283 billion against an estimated target of rupees 329 billion. On the current revenue expenditure side, the revised estimates stand at rupees 1.037 trillion against budgeted of 1.089 trillion. Total size of the development budget during 2021-22 was rupees 329 billion, which includes provincial ADP of 222 billion, district ADP of 30 billion, federal PSDB of 5.3 billion. Provincial ADP of rupees 222 billion is revised at rupees 179 billion. By end of current financial year 2021-22, 740 schemes of various departments will successfully be completed. Out of 1,669 new schemes in ADP 2021-22, 1,450 schemes have been approved, which will continue as ongoing schemes in next year. By the end of current financial year, we will be able to spend 85% of the development budget, that is 15% higher than last financial year. It reflects on a growing capacity and a rational financial management. Madam Speaker, now I'll present to you the salient features of budget 2022-23. The total receipts of province for financial year 2022-23 are estimated at rupees 1.68 trillion against budget estimate of 1.45 trillion for current financial year, showing overall increase of 15.7%. Receipt from federal government on account of revenue assignment, state transfers and grants are estimated at rupees 1.055 trillion for next financial year, which continues to constitute 62.8% of total receipts of the province. It is an increase of 1.4% over budget estimate of rupees 86.8 billion. The receipt of federal PSDP is estimated at rupees 6.025 billion for next year. Receipts on account of foreign project assistance, budgetary support loan and grant 144.543 billion. Own resources on account of tax and non-tax received are estimated at rupees 374.5 billion. Madam Speaker, the total outlay for
financial year 2022-23 is estimated at rupees 1.7414 trillion. The current expenditure of the province is projected at rupees 1.254 trillion, which includes current revenue expenditure of rupees 1.199 trillion and current capital expenditure of 54.5 billion. This is 73.2% of total expenditure of the province. Madam Speaker, for the next financial year, the size of the development budget will be rupees 459.658 billion. This is in comparison of rupees 329.033 billion in the year 2021-22. This will include rupees 30 billion for district ADP, foreign project assistance of rupees 91.5 billion and rupees 6 billion are expected from federal PSDP grant for schemes being executed by the federal government. Madam Speaker, we've had a tough last 3.5 years with the previous government, which took every step to ensure that the people of Sindh suffered. We were subjected to targeting when it was distribution of development portfolio of the federal government. I have just given you details कि किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी की गई थी. मैडम स्पीकर, अगले साल में 2,506 ऑनगोइंग स्कीम्स है, एलोकेशन 253 बिलियन है, जो कि तकरीबन 75% है जीडीपी का. 1,652 नई स्कीम with an allocation of 79 billion being 25% of total ADP आई है. Ongoing schemes 70% से एक्सपेंडिचर इस मेड यहाँ हो चुका है, उसको हम अगले साल फुली फंड करेंगे. अगले साल के लिए हमने 1,510 स्कीम को फुली फंड किया है और इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी कि जून 2023 तक हम 1,510 नई स्कीमें, जो कि एक रिकॉर्ड होगा, हम अगले साल करनी चाहिए. एलोकेशन और एजुकेशन सेक्टर, हमने एजुकेशन में 34.2 बिलियन रखा है. इस साल का रिवाइज एस्टिमेट 15.11 बिलियन का, ये 127% इंक्रीज है एजुकेशन की डेवलपमेंट बजट में. हेल्थ सेक्टर में हमने 23.33 अरब रुपए रखा है. इस साल 11.9 बिलियन का रिवाइज एस्टिमेट था और ये 96% इंक्रीज है हेल्थ बजट में. वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में हमने 188% इंक्रीज किया और अगले साल का बजट 59.36 बिलियन है. इरिगेशन और एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक सेक्टर में हमने 26% इंक्रीज किया है और अगले साल का एडीपी 42.7 अरब रुपए है. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वो रोड सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर में हमने 75% इंक्रीज किया है और इस साल ये 100.64 बिलियन होगा एज कंपेयर टू 57.383 बिलियन इन द आउटगोइंग करंट फाइनेंशियल ईयर. कराची बेस स्कीम्स के लिए जैसे मैंने बताया 118 अरब रुपए रखे गए हैं. हम अगले साल 3,653 नई नौकरियां, नई थोड़ा सा बताना चाहूंगा. जेपीएमसी को हमने 494 मिलियन दिए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23. 3.5 अरब रुपए टीपीआई वैक्सीन के लिए रखे हैं. NACEPD के लिए हमने 12.539 बिलियन रखे हैं. सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के लिए 1.1 बिलियन
25 मिलियन हमने गामा लाइव रेडियो सर्जरी सेंटर टाउन यूनिवर्सिटी के लिए रखा है। 200 मिलियन हमने ग्रांट दिए टीपी सेंटर कराची को। पीपीएचआई के लिए 11.5 मिलियन रुपीस, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा के लिए 2.4 मिलियन रुपीस। मैं इनिशिएटिव जो सिंध हुकूमत के उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके लिए अगले साल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध के बजट का हुजम 1700 अरब रुपए से जायद है। पेंशन के लिए 174 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट के नंबर्स देने से पहले रिलीफ का बताऊंगा। वज़ीर आला ने कहा तरक्याती बजट में वफाकी पीएसडी का हिस्सा 6 अरब के करीब है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जा रहा है, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में भी 15% का इजाफा किया जा रहा है। हम कोई नए टैक्सेस नहीं लगा रहे बल्कि टैक्सेस खत्म कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।